Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in civics, presidential democracy. In the previous video we discussed about the parliamentary democracy where Prime Minister and his Council of Ministers always accountable towards Lok Sabha. But now in a presidential democracy, the leader is called president. In a parliamentary democracy, the leader is prime minister. But in a presidential democracy, the leader is called president, and he or she is elected by citizens to lead the branch of government separate from the legislative branch. It means president represent a separate branch is called executive, and those are separate from legislative. But if we talk about parliamentary government, it's not separate from legislature. Why? Because of that it's a part of executive and also it's a part of legislature. But in a presidential democracy, the leader is called president and he or she is elected by citizens who lead the branch of government separate from legislative branch. It means it's a separate from legislative. President belongs of executive branch and it's a separate from legislative branch. Now the laws that the legislative wants to pass, must first go through the president. If the legislative wants to pass a laws, must first go through the president. It means first approved by president. He can sign them into being or can veto them. President have authority to sign them or veto them. It means ignore them, no response on particular laws. It is called veto power of president. The president can go to the legislative branch and suggest laws. It means in a presidential system, president suggests legislative to make that laws, but they ultimately write them for his approval, and also they suggest to approve that laws. It means president suggest, and the US Parliament is called Congress, and there is a two chamber of US Parliament is Congress. First, House of Representative, and second, Senate. House of Representative just like our Lok Sabha, and Senate just like our Rajya Sabha. Now in a presidential democracy, the head of state is also the head of the government. In a parliamentary democracy, there is a two head. One is represent state and one is represent government. In a parliamentary democracy, head of state is a president and head of government prime minister. But if we talk about presidential democracy, where head of state is also the head of government, it means there is only one head both for country and for government. Now the president can be removed by special process, impeachment motion in the presidential system. In a parliamentary system, prime minister removed from their post through motion of no confidence motion. But in a presidential system, if president wants to remove, a special removal process is called impeachment motion. It's a very tough procedure, and that's the same procedures borrowed from US Constitution. In our Constitution, that the removal process of president is impeachment motion. It means in our country, if president remove from their post through impeachment motion, if the High Court and the Supreme Court judges or Chief Justice remove through same process. So in a presidential system, president can be removed by a special process. This is called impeachment motion. So now that is the presidential democracy. Example, USA.
and Sudan and other countries. Now that is the presidential democracy. आज हम civics में presidential democracy पर डिस्कशन कर रहे हैं. इसमें जो है लीडर प्राइम प्रेसिडेंट होता है, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है. यहाँ पर वह चूज किया जाता है पब्लिक के थ्रू, जो कि लीड करता है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में लीडर प्रेसिडेंट होता है जो कि पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होता है, और वह इट्स लीड ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. वह गवर्नमेंट की ब्रांच को लीड करता है, एग्जीक्यूटिव को, जो कि सेपरेट होती है लेजिस्लेटिव से, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लेजिस्लेटिव का फंक्शन लॉ मेकिंग है और एग्जीक्यूटिव का लॉ इम्प्लीमेंटेशन है, यानी लागू कराना. द लॉज दैट लेजिस्लेटिव वांट्स टू पास मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द प्रेसिडेंट. अगर लेजिस्लेटिव ये चाहती है कि लॉ को पास करा दिया जाए, तो पहले प्रेसिडेंट के पास वो जाता है. ही कैन साइन देम इनटू बीइंग और ही कैन वीटो देम. या तो वो साइन कर सकता है या वो उस पर वीटो कर सकता है. वीटो एक ऐसा पावर है जिसपे वो प्रेसिडेंट कोई जवाब ना दे और वह उसे अपने पास रख ले. इसे ही वीटो पावर कहते हैं. इसका मतलब कि वह लॉ जो है खत्म हो गया एक तरीके से. द प्रेसिडेंट कैन गो द लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड सजेस्ट. प्रेसिडेंट जो है वहां पर लेजिस्लेटिव ब्रांच को सजेस्ट कर सकता है लॉ मेकिंग के लिए, और अल्टीमेटली उसी को उसे अप्रूवल देना है. बट दे अल्टीमेटली राइट देम फॉर दिस अप्रूवल. और सजेस्ट बनाने के लिए सजेस्ट भी कर सकता है और अप्रूवल के लिए भी सजेशन दे सकता है लेजिस्लेटिव को. In a presidential democracy, head of state is also the head of government. Presidential democracy में head of state और head of government एक ही होता है, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि हेड ऑफ स्टेट एक अलग होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है. हेड ऑफ स्टेट नॉमिनल होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है रियल होता है. बट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही होते हैं. द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पेशल प्रोसेस इम्पीचमेंट मोशन. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं एक स्पेशल प्रोविजन से, जिसे इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं, जो कि एक बहुत टफ प्रोसीजर है. यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मोशंस के थ्रू ही हटाया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है. हमने अपने वहां यह इम्पीचमेंट मोशन अडॉप्ट किया है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए हमने ये प्रोसेस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, इम्पीचमेंट मोशन का प्रोसेस. तो जो कि एक टफ प्रोसीजर है. तो ये है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जहां पर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हराया जा सकता है, बट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मोशंस के थ्रू हटाया जा सकता है. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर होगा. अगर वह प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा. यह मैंडेटरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक. और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मेंबर होता है लेजिस्लेटिव का, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है. बट प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट जो है किसी हाउस का मेंबर नहीं होता. हम जान रहे हैं कि अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहते हैं. उसके भी 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे को सीनेट कहते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैसे ही जैसे हमारे वहां लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, और दूसरा जो वहां पर चैम्बर है उसे सीनेट कहा जाता है, वैसे ही जैसे हमारे वहां राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है. सो नाउ दैट इज द presidential democracy, and it is also the comparative study of presidential democracy and parliamentary democracy.